Let's going to discuss about the draft fans. Uh, okay, so before that, we are just going to discuss about we have drawn the flue gas flow diagram of the thermal power plant. Okay, so one is a flue gas flow diagram, and second cycle is your water steam flow cycle. Okay, so this is your flue gas flow cycle. Can you can say of a thermal power plant. Now in this you can see that. Uh, First of all, we have this boiler. Okay, in this boiler there is a water, so the water get boils over here, and this go, and this is the part of a steam cycle. But since it is connected with the furnace, that's why we are going to show this over here. So this is the furnace. In the furnace the coal is going to burn. इसमें कोयला जलाया जाता है, और ग्रेड जो होता है ये पुराने बॉयलर्स में होता था, अब तो नहीं होता. नाउ इन द न्यू बॉयलर्स वी हैव द फायर गन्स. ओके, फायर गन्स होती हैं उसके अंदर. ग्रेट पहले होता था. ग्रेट ये एक तरह का जाल हुआ करता था जिसके ऊपर कोयला होता था और कोयला जलाया जाता था. इसके बीच में यहाँ पर आपकी ऐश आ जाया करती थी, उसको हटाने का, रिमूव करने का अलग सिस्टम था. बट दिस इज़ द फर्नेस. ओके, जिसमें आपका कोयला जलता था. देन आफ्टर दिस दैट फ्लू gas cycle comes through the move through the economizer, air preheater and precipitator. इकोनोमाइज़र और एयर प्रीहीटर ये दोनों जब आपकी यहाँ से फ्लू गैसेस जो जाएंगी आपकी आपके पानी को बॉईल कराने के बाद में, तो ये इसके थ्रू जब ये मूव करेंगी तो इसमें कुछ ना कुछ हीट तो होगी. तो उस हीट को हम इकोनोमाइज़र में और एयर प्रीहीटर में यूटिलाइज़ करते हैं. अब इकोनोमाइज़र में और एयर प्रीहीटर में हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. वी आर नाउ फोकसिंग ओनली ऑन द ड्राफ्ट सिस्टम. ओके, so there are two types of draft system. One is your natural draft system, and second is your mechanical draft. Okay, there are two type of ड्राफ्ट सिस्टम. इन नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम जो होता है उसमें आपके फैंस नहीं होते, ड्राफ्ट फैंस नहीं होते. ड्राफ्ट फैंस कौन से हैं? जैसे कि एक यहाँ पर फोर्स ड्राफ्ट फैन आपका ये लगा हुआ है, और इंड्यूस ड्राफ्ट फैन यहाँ लगा हुआ है. ठीक है, ये दोनों आपके मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम के पार्ट है, नॉट ऑफ द नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम. नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, वी डोंट हैव एनी फैन ओवर हेयर. ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो सिस्टम होता है इसमें से आप फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट को हटा दीजिए. ठीक है, तो ये सिंपली चिमनी से कनेक्टेड होता है, और चिमनी से जब कनेक्टेड होता है जो फ्लू गैसेस साइकिल होती है वो इसमें मूव करने के बाद में चिमनी की तरफ जाती है. चिमनी की हाइट आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जितनी भी पार्टिकुलेट मैटर्स और जो जो फ्लू गैसेस होती हैं वो सिंपली आपकी इन्वायरमेंट में और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर वो हवा में रिलीज़ कर दी जाती हैं. सो वी डोंट हैव एनी मैनेज सिस्टम फॉर दैट, मतलब नॉट दैट टाइप ऑफ मैनेज सिस्टम फॉर दैट. और ये छोटे स्मॉल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली. बट इन द लार्ज पावर प्लांट्स वी यूज़ फोर्स ड्राफ्ट फैन. Okay, so first of all, just you should write some basics about the natural draft fan. So natural draft fan is provided by chimney. Okay, and the chimney is used to produce draft so that the air flow into the boiler and products of combustion are discharged at the atmosphere. Okay, so this is what, this is simply your नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम. ओके, तो ये आपका नेचुरल ड्राफ्ट सिस्टम है. उसके बाद में मैकेनिकल ड्राफ्ट सिस्टम में आपका जो अगर आप आएंगे, नाउ वन मोर थिंग व्हाट द चिमनी डू. चिमनी इज बेसिकली यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन एंड फ्लाई ऐश टू अ हाई ऑल्टीट्यूड सो दैट एयर पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड. अब उसको अगर ऊपर कुछ हाइट पे ले जाकर रिलीज किया जाएगा तो एयर पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पर कम होगा. ओके, एंड द गैसेज विद इन द चिमनी आर एट हायर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग. और उसकी वजह से टेम्परेचर, ग्राउंड लेवल का टेम्परेचर भी जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा.
So intensity of the natural draft depends on the height of the chimney and difference of outside and inside gas temperature. Okay, so these are the some basics of the natural draft system. Now let's come to the mechanical draft system. And the natural draft system, as I have told you, it is used for a small power plant. A small power plant. Whereas mechanical draft system is used for large power plants. Okay. Now come to the mechanical draft system. So large size plants need large volume of air, क्योंकि उसमें कोयला जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको एयर ज़्यादा चाहिए होगी, तो लार्ज साइज प्लांट नीड्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर. सो चिमनी कांट प्रोवाइड एनफ ड्राफ्ट. अब चिमनी अगर डायरेक्ट आप लगाएंगे विदाउट फैंस तो उसमें इतना ड्राफ्ट आपको नहीं मिल पाएगा, इतना फ्लो ऑफ एयर नहीं हो पाएगा. सो द मूवमेंट ऑफ एयर इज ड्यू टू एक्शन ऑफ फैन. सो फैंस आर यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग. Okay, so fans are used for drafting. Now we use two fans, as you can see in the diagram, on the both ends of the power plant. दोनों ends पे यूज़ किया जाता है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर और चिमनी से जस्ट पहले एंड पॉइंट आप कह सकते हैं इसको. ठीक है. फोर्स ड्राफ्टिंग, ये यहाँ से एयर फोर्सफुली फर्नेस के अंदर जो है वो ब्लो करता है. ठीक है. और ये इंड्यूस ड्राफ्ट फैन यहाँ से ये सक करता है एयर, और सक करने के बाद में आपकी चिमनी में दे देता है. ठीक है. तो फ्रॉम हेयर वी आर फोर्सिंग द एयर एंड फ्रॉम हेयर वी आर सकिंग द एयर. तो इससे आपका एयर का फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है. ओके. सो मैकेनिकल ड्राफ्ट कैन बी वन फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, okay. So as you can see in the diagram, it is installed near the base of the boiler. Okay. And this fan forces air through the furnace. You can see through the furnace, through the economizer, air preheater, precipitator, and then into the chimney. Okay. And the pressure of air is greater than atmosphere, and air is forced to flow through the system. Okay, so this is simply the working of the forced draft fan. And then when you come to the second one, induced draft system. Induced draft system. So as you can see in the diagram also, it is installed nearby the chimney, just before the chimney. So fan is installed below base of the chimney. The burned gases are sucked out of the boiler. उसमें उसको suck किया जाता है, खींच ली जाती हैं out of the boiler, thus reducing the pressure inside the boiler, जिसकी वजह से बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, less than the atmosphere. Okay, so this induces fresh air to enter the furnace. तो जब अंदर का प्रेशर, जब यहाँ एयर सक कर ली जाएगी तो यहाँ अंदर का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा. जब अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर की एयर आने में आसानी रहेगी इसमें. Okay, so this induces fresh air to enter the furnace. It helps in sucking the products of combustion out of the system. Okay, so this is the simple working of the draft system. Okay, so draft fans are used to make ways for the air quickly, okay, in a faster manner than in the natural draft system, so that more amount of water can be boiled easily by using the furnace. So in this small lecture we are just going to discuss about the draft system. Okay, thank you, thanks a lot.